Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. This is my YouTube channel. तो केमिस्ट्री की कंप्लीट स्टडी के लिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर जो दिया हुआ है उसी में से कार्बोनिल कंपाउंड्स पिछले वीडियोस में डिस्कस हुए, उनके बारे में डिटेल स्टडी कराई। वो थे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। आज के क्लास में हमने कार्बोनिल कंपाउंड में, जिसमें कि COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके दो कंपाउंड लिए हैं। पहला है फॉर्मिक एसिड और दूसरा लिया है एसिटिक एसिड। तो आज के क्लास में हम फॉर्मिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड, प्रॉपर्टीज एंड सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इस पे डिस्कस करेंगे। एसिटिक एसिड पे कंप्लीट स्टडी के बाद दोनों के कंपैरिजन का जो टेबल चार्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या दोनों में सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मिक एसिड से। Formic acid molecular formula HCOOH. It is known as methanoic acid. Now formic acid or methanoic acid, this is the molecular formula of formic acid or methanoic acid, HCOOH. Formic acid is first member of monocarboxylic acid series. It occurs in sting of bees, wasps, red ant, stinging nettles, and fruits. In traces, it is present in perspiration, urine, blood, and in caterpillars. It was first prepared by the distillation of red ants, and hence the name was given formic acid. The, in Latin, uh, ant means formica, then it was name given formic acid. The method of preparation. The following methods can be used for this preparation. First है oxidation of methyl alcohol or formaldehyde. The mixture containing vapors of methyl alcohol or formaldehyde and air is passed over platinum black when oxidation occurs with the formation of formic acid. With air, methyl alcohol reacts in presence of platinum form formaldehyde, and this formaldehyde oxidized in presence of platinum to form formic acid. Overall reaction is this: methyl alcohol plus O2, it forms formic acid and H2O. The oxidation is also done with acidified dichromate potassium or sodium or alkaline potassium permanganate. Methyl alcohol is first converted into formaldehyde, which undergoes further oxidation to form formic acid. Now, hydrolysis of hydrocyanic acid. Formic acid is formed by the hydrolysis of hydrocyanic acid with acids or alkalis like this. HCN reacts with water in presence of HCl. The reaction is in the presence of HCl. It forms formic acid and ammonia. Hydrocyanic acid also reacts with water in presence of NaOH. It forms sodium formate प्लस NH3। तो सोडियम फॉर्मेट से हम एसिटिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ हाइड्रोलिसिस, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। व्हेन क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म इज हीटेड with caustic potash. Caustic potash is an alcoholic solution.
potassium formate is formed and also KCl and H2O form. Now potassium formate reacts with sulfuric acid to form formic acid and potassium hydrogen sulfate. Now hydrolysis of methyl formate. This is the methyl formates. Methyl formate is heated with sulfuric acid and methyl alcohol are formed. Then formic acid and methyl alcohol are formed. Now laboratory preparation of formic acid. Formic acid is conveniently prepared in the laboratory by heating glycerol with oxalic acid. Glycerol के reaction में भी ये चीज पढ़ चुके हो. At a temperature 373 to 393 Kelvin. In actual practice, glycerol is first heated at 378 Kelvin and then hydrated oxalic acid is added and the temperature is raised to 383 Kelvin. Glycerol monooxalate is first formed, which decomposes into glycerol monoformate and carbon dioxide. When the evolution of carbon dioxide ceases, more of oxalic acid is added. The monoformate gets hydrolyzed to formic acid, hydrolyzed to formic acid, regenerating glycerol, which reacts with fresh oxalic acid. Thus, a small quantity of glycerol is sufficient to convert large quantity of oxalic acid into formic acid. The reaction सामने है. Glycerol reacts with oxalic acid at 383 Kelvin. This is overall reaction. तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट में. यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है 383 डिग्री केल्विन पे. पहले टेम्परेचर रखते हैं 373. टेम्परेचर रेस करने पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और ये बनता है मोनो फॉर्मेट विच रिएक्ट्स विद oxalic acid again and forms formic acid and glycerol. The apparatus is that glycerol plus oxalic acid in the round bottom flask. यहाँ पे हीट करने पे रिएक्शन होता है ग्लिसरॉल और एसिड फॉर्मिक एसिड बनते हैं जिसको हम कंडेंसर से यहाँ फॉर्मिक एसिड और वाटर यहाँ पे टेम्परेचर 383 केल्विन टेम्परेचर पे फॉर्मिक ऑक्साइड बनता है और कंडेंस होके यहाँ पे रिसीवर में इकट्ठा होता है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड. तो इस तरह से जो फॉर्मिक एसिड बना उसमें वाटर प्रेजेंट होता है. अब इसको हम किस तरह से एनहाइड्रस करेंगे. 50 ml of anhydrous glycerol and 30 gram of crystalline oxalic acid are taken in a distillation flask fitted with a thermometer and leaving condenser. The bulb of thermometer should be fixed in mixture. The flask is heated at 383 Kelvin. Evolution of carbon dioxide occurs. When the reaction takes more oxalic acid is added and heating at 383 Kelvin is continued. Formic acid distills over and collected in a receiver. The distillate contains formic acid and water. वही प्रोसीजर था जो अभी डायग्राम्स के साथ देखा. Anhydrous formic acid cannot be obtained from the distillate by fractional distillation, as the boiling point of water 373 and formic acid 373.5 Kelvin are nearly equal. Now the following procedure applied to obtaining anhydrous formic acid. The aqueous solution of formic acid is neutralized with lead carbonate. The solution is filtered. lead carbonate से न्यूट्रलाइज करते हैं तो बनता है lead formate. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग होता है. Then this lead carbonate
जो है पास करते हैं H2H गैस, तो ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और प्योर फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन्ड होता है. The aqueous solution of formic acid is neutralized with lead carbonate. See in the equation. The solution is filtered and filtrate on concentration and cooling forms crystal of lead formate. The crystals are filtered and dried. The crystals are filled in the inner tube of water condenser. One end of the tube is connected to hydrogen sulfide generator and the other to a Buckner flask poured with a calcium chloride tube. Hydrogen sulfide is allowed to pass through the inner tube while steam is passed through its outer jacket. The anhydrous formic acid collects in the Buchner flask. It is usually contaminated with hydrogen sulfide. It is redistilled over dry lead format like this. इस तरह से सारा apparatus होता है. इसमें एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड आता है, वहाँ जहाँ बन रहा है फ्लास्क में ड्राई हाइड्रोजन सल्फाइड कनेक्ट कर देते हैं कंडेंसर से और इसमें एनहाइड्रो फार्मिक एसिड है, तो यहाँ पे रिएक्शन होता है. ये सारा सिस्टम है. लेड फॉर्मेट यहाँ पे बनता है और इसको कैल्शियम क्लोराइड यहाँ से भेजा जाता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. और अभी रिएक्शन में देखा किस तरह से लेड सल्फाइड बनता है और फॉर्मिक एसिड के क्रिस्टल अलग कर लिए जाते हैं. Now preparation, this is the diagram of preparation of anhydrous formic acid. Now industrial preparation of formic acid. Formic acid is prepared on industrial scale by heating sodium hydroxide with carbon monoxide at 483 Kelvin under a pressure of about 10 atmospheres. CO reacts with carbon monoxide, reacts with NaOH to form sodium formate. Sodium formate thus formed is distilled with sodium hydrogen sulfate when anhydrous formic acid distills over. Now physical properties of formic acid पे आते हैं. तो सबसे पहले physical properties of formic acid. It is a colorless, pungent smelling liquid. Formic acid melts at 281.4 Kelvin. It melts at 281.4 Kelvin and boils at 373.5 Kelvin. It is miscible with water, alcohol and ether. It forms azeotropic mixture with water. Boiling point 380.1 Kelvin. It is strongly corrosive and causes blisters on skin. It exists in aqueous solution as a dimer involving hydrogen bonding. एक्वस सॉल्यूशन में इस तरह से डाइमर की तरह से ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये मॉलिक्यूल एक फॉर्मिक एसिड का ये है और दूसरा ये है, तो जो O और H के बीच यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिससे ये एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन में. Now chemical properties of formic acid. Formic acid is the strongest acid among all the members of the homologous series. Formic acid and acetic acid exhibit some characteristics which are not shown by the other member. This unique nature is due to the fact that it contains both aldehyde group and carbonyl group. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. इसका HC डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप हो गया ये, और HCHO तो एल्डिहाइड ग्रुप, यानी दोनों ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये इस अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है. नाउ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है. तो पहले हम एसिडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे किस तरह की, क्योंकि ये एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी तो होगी ही.
It is a monobasic acid. Its dissociation constant value is 1.8 into 10 to the power minus 5 at 298 Kelvin. Its acidic properties are due to its ionization in aqueous solution like this. In aqueous solution, formic acid dissociates into formate ion. This is formate ion and hydroxyl ion. It reacts with carbonate and bicarbonates evolving carbon dioxide. Reacts with sodium carbonate and sodium bicarbonate and sodium carbonate forms sodium formate H2O and CO2. Third, it reacts with alkalis to form corresponding salts. The salts of formic acid are termed as formates. Most of the formates are soluble in water, but lead and silver formates are insoluble in water. Formic acid reacts with NaOH, strong base, and NH4OH, weak base, forms sodium formate and ammonium formate with water. Another characteristic, highly electropositive metals evolve hydrogen when react with formic acid. Formic acid, highly reactive electropositive metal to form sodium formate. It combines with alcohol to form esters. It is not necessary to use a mineral acid as to catalyze the reaction since the formic acid itself act as a catalyst. तो मिनरल एसिड ऐड करने पे कैटलिस्ट रिएक्शन और फास्ट होता है, लेकिन ना भी ऐड किया जाए तो ये रिएक्शन होता है. और दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज मेथिल अल्कोहल, reacts to form methyl formate. It reacts with phosphorus pentachloride to give formyl chloride. बार कर जा रहा है. चलो. It reacts with phosphorus pentachloride or sulfonyl chloride to give formyl chloride, which is not a stable compound. It decomposes at once into hydrogen chloride and carbon monoxide. Formic acid react इक्वेशन इज हियर PCl5, तो फॉर्मिल क्लोराइड बनता है जो कि अनस्टेबल है और ये HCl और CO में डिसोसिएट हो जाता है. नाउ एक्शन ऑफ हीट, व्हेन हीटेड above 433 Kelvin, it decomposes to give carbon dioxide and hydrogen. Like the reaction is this. Now dehydration. When formic acid is warmed with concentrated sulfuric acid, it decomposes to give carbon monoxide and water. In presence of sulfuric acid heated formic acid, then CO and H2 is formed. Now some point to be noted is formic acid does not form an anhydride. The above reaction is used for the preparation of carbon monoxide in the laboratory. Now action of heat on formates. जो साल्ट बनता है उस पर क्या एक्शन होता है हीट का. Sodium formate, this is a salt of formic acid. When sodium formate is heated to 633, it decomposes to form sodium oxalate and hydrogen. This is the sodium oxalate. It does not form hydrocarbon when sodium formate is heated with soda lime or its aqueous solution is electrolyzed. It reacts with NaOH in presence of calcium oxide and forms sodium carbonate and hydrogen is evolved. Now formaldehyde is formed when dry calcium. Formaldehyde is formed when dry calcium formate is heated. Calcium formate heated, it forms formaldehyde and calcium carbonate. Now formaldehyde, this is pharma
formamide is formed when ammonium formate is heated. This is formamide, HCONH2. Then ammonium formate, when heated, it forms formamide NH2O. And this formamide, when heated with phosphorus pentaoxide, it forms hydrogen cyanide and H2O. Now, reducing properties. Like aldehyde, formic acid behave as reducing agent. It is oxidized to an unstable acid, carbonic acid, which decompose into CO2 and H2O. Formic acid, when oxidized to form unstable carbonic acid, which decomposes into CO2 plus H2O. It decolorizes acidified potassium permanganate solution and turns K2 potassium or chromate solution into green. It reacts with KMnO4. ओवरऑल रिएक्शन से पहले हम देखते हैं इधर एसिडिफाइड KMnO4 आपस में रिएक्शन होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट होती है फार्मिक एसिड से तो CO2 प्लस H2O बनता है। KMnO4 डीकलराइज हो जाता है इस रिएक्शन में क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट आयन से मैग्नीज सल्फेट बनता है। ओवरऑल रिएक्शन potassium permanganate reacts with sulfuric acid and formic acid. This is acidified potassium permanganate solution. Formic acid से reacts होता है तो product potassium sulfate, manganese sulfate, carbon dioxide and water बनता है। It reduces mercury chloride to mercurous chloride, Hg2Cl2 to mercury black. Formic acid reacts with mercury chloride to form mercurous chloride, CO2 and HCl. And formic acid reacts with mercurous chloride. This is mercury chloride. This is mercurous chloride to form CO2, HCl and mercury अलग होता है। It reduces ammonical silver nitrate, that is known as ammonical silver nitrate is tolerant region. In tolerant reagents, silver nitrate is present. Silver nitrate and ammonium hydroxide दोनों होता है और दोनों के रिएक्शन से बनता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। नाउ दिस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर ऑक्साइड एंड H2O। तो ये टॉलेंट रिएजेंट जब बनाया जाता है तो ये इन दोनों रिएजेंट को मिला करके बनाते हैं जिसके रिएक्शन के बाद उसमें क्या प्रेजेंट होता है सिल्वर ऑक्साइड और ये सिल्वर टॉलेंट रिएजेंट का सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करता है गर्म करने पे बनता है सिल्वर मिरर दिखाई देता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। नाउ इट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है फेलिंग सॉल्यूशन में। फेलिंग सॉल्यूशन का क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करके रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O इवॉल्व होती है। नाउ यूज ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड as in the laboratory for preparation of carbon monoxide. It is used in the preservation of fruits. It is used in textile dyeing and finishing. It is used in leather tanning. It is used, formic acid used as a coagulating agent for the rubber latex and it is an antiseptic and in the treatment of cord. Formic acid used in the manufacture of plastic and waterproofing compounds. It is used in electroplating to give proper deposit of metals. It is used in the preparation of nickel formate, which is used as a catalyst in the hydrogenation of oils. It also used as a reducing agent and in the manufacture of oxalic acid. Now, test of formic acid. It turns blue litmus red. This is the acidic character.
Its aqueous solution gives effervescence with sodium bicarbonate. Its neutral solution gives red precipitate with failing solution. Its neutral solution with tolerance reagent gives silver mirror or black precipitate. It gives white precipitate with mercury chloride which changes to gray. Now mercury chloride changes to mercurous chloride of white TPT. It converted into Hg. And For formic acid, when heated with concentrated sulfuric acid, it evolves carbon dioxide which burns with blue flame on the mouth of the test tube. The neutral solution gives greenish blue color when treated with sodium bisulfide and sodium nitroprusside. These points are important for the practical. On adding a freshly prepared ferric chloride solution to a neutral solution of the acid, a red color is produced which change to brown precipitate on heating. तो फॉर्मिक एसिड के बारे में इस तरह से पूरा डिस्कशन पूरा हुआ, जिसमें हमने उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, एसिडिक कैरेक्टर्स, यूजेस एंड मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें तुम लोगों के सामने शेयर की. अब हम आते हैं एसिटिक एसिड. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH. Acetic acid known as ethanoic acid, CH3, molecular formula CH3COOH. Acetic acid is the oldest known fatty acid. It is the chief constituent of vinegar and hence its Latin name acetum से ये पड़ा है vinegar. In free state, it occurs in a number of fruit juice which have undergone fermentation and have turned sour. In the combined state, it is present in biological fruits and plant extract. Acetic acid was the first organic compound synthesized in the laboratory from its element by Kolbe in 1844. Now preparation, it can be prepared by the any general method of its preparation. किसी भी जनरल मेथड से, जो कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, उससे बनाया जा सकता है. नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड. ओल्ड मेथड एंड मॉडर्न मेथड बारी बारी से हम देखते हैं. ओल्ड मेथड अब कम यूज होता है, लेकिन इससे भी बनाया जाता है. फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड, मेथिल एल्कोहल के प्रिपरेशन में देखा था किस तरह से पायरोलिग्नियस एसिड निकलता है, जिसमें कि एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट होता है. The pyroligneous acid obtained by the destructive distillation of wood contains about 9 to 10% acetic acid beside 2 to 2.5% methyl alcohol and 0.5% acetone. तो सबसे ज़्यादा इसमें एसिटिक एसिड ही होता है. The pyroligneous acid is distilled in a copper vessels and vapors are passed through hot milk of lime, where acetic acid is retained as non-volatile calcium acetate. Now milk of lime, that is calcium hydroxide, reacts with acetic acid to form calcium acetate and water. Calcium acetate is crystallized from the solution and distilled with calculated amount of concentrated sulfuric acid when a dilute solution of acetic acid is obtained. This is calcium acetate, reacts with sulfuric acid to form acetic acid and calcium sulfate. The dilute acid is neutralized with sodium carbonate and sodium acetate is crystallized. The crystals are made anhydrous by heating. The anhydrous salt is then distilled with calculated quantity of concentrated sulfuric acid. When 100% pure acid, that is glacial acetic acid, is obtained. Now second method from ethyl alcohol. This is quick vinegar process.
Vinegar is 6 to 10% aqueous solution of acetic acid. It is obtained by fermentation of liquor containing 12 to 15% ethyl alcohol. Fermentation is done by bacterium Mycoderma aceti in presence of air at 303 Kelvin to 308 Kelvin. The process is termed acetous fermentation. A reaction like this, ethyl alcohol reacts with the oxygen of air in presence of Mycoderma aceti. This is bacteria and it converted into acetic acid. Large wooden vats fitted with a perforated cover and bottom are used. These are filled with wood shavings impregnated, impregnated impregnated with old vinegar. Old vinegar contains bacterium Mycoderma aceti. Dilute alcoholic solution containing the growth nutrients like phosphate and inorganic salt is allowed to trickle down through the shavings, while an upward current of air enters through the holes near the bottom. The heat generated in the oxidation of alcohol to acetic acid maintains the temperature at 308 kelvin. The dilute acid solution obtained from first vat is allowed to trickle from the top of few other similar vats kept in series till the concentration reaches about 8 to 10%. It is a slow process and takes place 8 to 10 days for the completion. तो प्रोसेस के बारे में जाने से पहले हम इस डायग्राम को पहले देखेंगे. ये पूरा इस तरह से इसका डायग्राम है. ये डाइल्यूट एथिल एल्कोहल यहाँ से इस अंदर की तरफ भेजा जाता है. ये पूरा सिस्टम है. प्रोफोरेटेड टैप्स है. यहाँ से ये नीचे धीरे धीरे कहाँ गिरता है, वुडन शेविंग पे, जहाँ पे एयर अंदर जाने के लिए जगह बनाई जाती है. इससे अंदर अनर एयर जाए और यहाँ पे के बीच रिएक्शन होता है एथिल एल्कोहल और ऑक्सीजन के बीच में, और रिएक्शन के बाद ये यहाँ क्या बनता है, विनेगर, जिसको हम इस तरह से बाहर निकाल देते हैं. तो ये डायग्राम है पूरे प्रोसेस का. और उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस पे कि प्रोसेस किस तरह से होता है कंप्लीट. In this process, the following precautions are necessary. The concentration of the ethyl alcohol should not be more than 15%, otherwise the bacteria becomes inactive. Second, the supply of air should be regulated. With less air, the oxidation takes place only up to acetaldehyde stage, while with excess of air, the acid is oxidized to CO2 and water. तो ये चीजें बातें ध्यान रखना जरूरी है इस काम में. The flow of alcohol is so regulated that temperature does not exceed 308 Kelvin, which is the optimum temperature for bacterial growth. तो ये सारी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है. द एसिटिक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इन विनेगर with the help of lime. The calcium acetate crystallizes from the solution is distilled with concentrated sulfuric acid when pure acetic acid distilled over. Now modern method. This is जो अभी डिस्कस हुआ वो ओल्ड मेथड था, और अब हम आते हैं मॉडर्न मेथड. फर्स्ट मेथड फ्रॉम एसिटिलीन. Acetylene is first converted into acetaldehyde by passing through 40% sulfuric acid at 333 Kelvin in presence of mercuric sulfate.
This is mercuric sulfate is a catalyst. Acetylene reacts with water in presence of sulfuric acid and 1% mercuric sulfate and forms acetaldehyde. The acetaldehyde is oxidized to acetic acid by passing a mixture of acetaldehyde vapor and air over manganese acetate at 343 Kelvin. Acetaldehyde form reacts with O2 जब यहाँ पास करते हैं ऑक्सीजन in presence of manganese acetate. Temperature is this, then this is oxidized to produce acetic acid. Now acetylene required for this purpose is obtained by the action of water on calcium carbide. एसिटिलीन कहाँ प्रोड्यूस होती है? कैल्शियम कार्बाइड के वाटर से रिएक्शन से, जो एसिटिलीन के प्रिपरेशन में पड़ा है. This is calcium carbide, water vapors form calcium hydroxide and acetylene. The yield is very good and the strength of acid prepared is 97%. The method is also quite cheap. The second method is by air oxidation of N-butane. The oxidation of butane is done by air at 473 Kelvin in presence of catalyst cobalt acetate. This is the cobalt acetate. The butane required for this purpose is obtained from petroleum. N-butane reacts with oxygen of air in presence of cobalt acetate to form acetic acid. Besides acetic acid, formic acid, propionic acid and acetone are also formed. Now, third process by the action of carbon monoxide on methyl alcohol. Methyl alcohol and carbon monoxide reacts together under a pressure of 30 atmospheric and 473 Kelvin in presence of catalyst cobalt octacarbonyl to form acetic acid like this. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड. तो पहले हम किस पे जाएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड. At ordinary temperature, acetic acid is a colorless corrosive liquid with a sharp pungent odor of vinegar. It has a short test. Below 289.5 Kelvin, it solidifies as an icy mass, hence it is named glacial acetic acid. It boils at 391 Kelvin. The high boiling point of acetic acid in comparison to alkanes, alkyl halides or alcohols of nearly same molecular masses is due to more stronger hydrogen bonding between acid molecules. This also explains dimer formation, acetic acid in vapor state. It is miscible with water, alcohol and ether in proportion. It is good solvent for phosphorus, sulfur, iodide and many organic compounds. Now see this, it is miscible with water, alcohol and ether in all proportions, and it is good solvent for phosphorus, sulfur, iodine and many organic compounds. Now chemical properties. Acetic acid is a typical member of fatty acid. It shows all the general characteristics of carboxylic acid. Now uses of acetic acid. It is used as a solvent and laboratory reagent. It is used as a vinegar for table purpose and for manufacturing pickles. It is used in coagulation of rubber latex and also used for the making various organic compounds such as acetone, acetic anhydride, acetyl chloride and acetamide ester, for making various useful metallic acetates such as basic copper acetate, which is used for making green paints, and aluminum, iron and chromium acetate, which are used as a mordant in dyeing.
It is the basic lead acetate which is used in the manufacture of white lead. Aluminum acetate which is used in the manufacture of waterproof fabrics. Acetic acid is used for making cellulose acetate which is required for manufacture of artificial silk and cellulite, and it is used for the making various dye stuffs, perfumes and medicine. Now test of acetic acid. Its aqueous solution turns blue litmus red. Its aqueous solution gives effervescence with sodium bicarbonate. दोनों फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज हो गई. The neutral solution of acetic acid gives a wine red color with neutral ferric chloride solution. Uh, Acetic acid, when heated with ethyl alcohol in presence of a small amount of concentrated sulfuric acid, it forms ethyl acetate which has fruity smell. Acetic acid does not show reducing properties like formic acid. It does not reduce tolerant reagent, failing solution and mercuric chloride. Now comparison of formic acid and acetic acid. तो इससे वो सारे रिएक्शन जो जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक दोनों की पढ़ी थी, तो जो रिएक्शन बताए गए थे वो सारे रिएक्शन इन कंपैरिजन में आ जाएंगे. नाउ एसिटिक नेचर. सबसे पहले फॉर्मिक एसिड है, इधर इधर एसिटिक एसिड. नाउ एसिटिक नेचर विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स reaction, formic acid react to form sodium formate and this form sodium acetate. With bases it forms salt and it also forms salt. तो ये सब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है. विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्शन होता है इस तरह से, और इसी तरह से एसिटिक एसिड भी सोडियम एसीटेट बनाता है. नाउ एस्टर फॉर्मेशन. Formic acid forms ester with heated with alcohol, and it also forms ester when heated with concentrate sulfuric acid. Now reaction with PCl5, formic acid reacts with PCl5 to form formal chloride which is unstable decomposed to give carbon monoxide and HCl, and acetic acid reacts PCl5 to form stable compound, that is carbon methyl carbonyl chloride. Now heating of ammonium salt. Salt of formic acid, that is ammonium formate. When heated, it converted into formamide, and when ammonium acetate, when heated, it forms the acetamide. Heating alone. Formic acid on heating converted into carbon dioxide and water, but acetic acid unaffected. Heating with concentrate H2SO4, formic acid forms carbon monoxide and H2O, and acetic acid unaffected. Now reaction with Cl2 in presence of P. Formic acid unaffected, but acetic acid forms monodi or trichloroacetic acid. Now action of heat ऑन सॉल्ट. कैल्शियम सॉल्ट पे को गर्म करने पे फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जबकि यहाँ कैल्शियम सॉल्ट को गर्म करने पे एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. सोडियम सॉल्ट और हीटिंग गिव सोडियम ऑक्सलेट. यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता. सोडियम सॉल्ट विथ सोडा लाइम. सोडियम सॉल्ट विथ सोडियम सोडा लाइम. सोडियम सॉल्ट एंड सोडा लाइम इन प्रेजेंस ऑफ, इन दोनों का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है. तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ भी सोडियम कार्बोनेट बनता है. इस रिएक्शन में फॉर्मिक एसिड से हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड से मीथेन बनती है. नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स. फॉर्मिक एसिड evolves hydrogen and acetic acid forms ethane. On heating with P2O5, formic acid unaffected, but acetic acid forms anhydride like this. Now reducing agent, tolerant reagent, failing reagent, mercury chloride, इन सबको रिड्यूस करता है. ये सारी रिएक्शन देख चुके हो. जबकि एसिटिक एसिड अनएफेक्टेड.
इसी तरह एसिटिफाइड के एमएनओ4 को ये डी कलराइज करता है, जबकि एसिटिक एसिड कोई रिएक्शन नहीं देता। एसिड न्यूट्रल सॉल्यूशन NaHSO3 प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ भी ग्रीनिश ब्लू कलर देता है, जबकि एसिटिक एसिड अनइफेक्टेड। नाउ एसिड न्यूट्रल सॉल्यूशन प्लस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, it gives red color with change into brown PPT on heating, but acetic acid gives wine red color. तो ये कंपेरिजन देखा जो है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में, उसके अलावा कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड इंडिविजुअली दोनों की डिस्कस हुई। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सारे रिएक्शन पढ़े थे, तो स्पेशली इन दोनों के बारे में भी आज स्टडी हो गई। तो इन सबको आप लोग जो हैं सारे रिएक्शन को जो कंपैरिजन में दिखाए गए और जो स्पेशली स्पेशल रिएक्शंस हैं, उन सारे रिएक्शन को देख करके, लिख करके, बार बार पढ़ करके आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं फॉर द कंपटीशन।